कैसे दिन आ गए हैं शोषण करने वाले ही शोषण की परिभाषा तय कर रहे हैं. The Supreme Court of India has stayed the University Grants Commission Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2026. If you go through the arguments put forth by the advocates and the court's observations, you will realize that there will be very serious consequences for the scheduled castes community. The Center for Annihilation of Caste foresees some of the effects of this case on the scheduled caste community. Effect number 1, the scheduled castes are now being accused of dividing the society. Now, raising your voice against caste-based discrimination perpetrated against the scheduled caste community is being equated with dividing the society. अब हम समाज को तोड़ने वाले बन गए हैं और जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई वो समाज को जोड़ने वाले बन गए हैं. Effect number 2, the scheduled castes are now being framed as the perpetrators of caste-based discrimination against the so-called upper caste. The so-called upper castes have now established themselves as victims of caste-based discrimination. अब हम जातिवादी हो गए हैं और वो जातिवाद के खिलाफ लड़ने वाले. Effect number 3, the scheduled castes are now being accused of being casteist among themselves. The court in this case referred to the claims of caste-based discrimination within the scheduled castes. अब ये कहा जाएगा कि असली जातिवाद तो शेड्यूल्ड कास्ट के बीच में होता है और उसे रोकने की ज़्यादा ज़रूरत है. इफेक्ट नंबर 4, द शेड्यूल्ड कास्ट्स आर नाउ बीइंग ब्रांडेड एज फेकस्टर्स एंड मिसयूजर्स. द चार्ज ऑफ फेक केसेस और मिसयूज ऑफ लॉ हैज़ नाउ बीन फॉर्मली प्लेस्ड ऑन द शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी. अब ये कहा जाएगा कि हम झूठ बोलते हैं, झूठे मुकदमे करते हैं और हमें कोई जाति सूचक शब्दों से नहीं बुलाता, हमें कोई कोटा वाला नहीं बुलाता. All of this will ultimately push us toward caste neutrality in India's anti-discrimination jurisprudence. I believe the last bastion of protection that we have, that is the Prevention of Atrocities Act, which is already riddled with legal loopholes, will also be scrapped. Slowly and steadily, they are turning the entire jurisprudence of caste-based discrimination in their favor, all while preserving and perpetuating the caste system. याद रखिएगा, ये जाति का उन्मूलन जातिवाद को खत्म करके नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति को खत्म करके करना चाहते हैं.